हाँ Psychology is not just a subject कि आपको सिर्फ teaching में जाना है. You can only be a counselor, you can only be a clinician, yeah you can do more things with that. researcher You can be a researcher, अब organizational psychologist. मेरे पास क्लाइंट आए जा रहे हैं, मुझे पता है वो उसको डील नहीं कर सकती, उसकी हेल्प नहीं कर सकती, मैं ले ही जा रही हूँ, सेशंस ले ही जा रही हूँ. यू आर नॉट डूइंग जस्टिस, राइट? सो आई थिंक अगेन माई फाउंडेशन गोज बैक टू माई एथिक्स. वन थिंग आई हैव रियलाइज कि आप जब अपना जर्नी शुरू करते हो, टेक वेरी रैशनल डिसीजंस, डोंट बी वेरी इमोशनल. एंड आई फील इमोशनल होना है, बट अपने सिर्फ विजन और अपने गोल के लिए इमोशनल होना है लाइफ में. और अपनी यू शुड नॉट take emotional decisions when it comes to money, when it comes to your ideas, when it comes to your investment. You have to be practical at certain points. You have to like think through. या फिर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होती है, मे बी 10, 20, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख रुपए, इससे ज़्यादा क्या हो सकता. बट देन स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ही वही है कि जब आपके पास कुछ नहीं है तभी तो लड़ने का, वही तो लड़ने का जज्बा है कि wherever human mind is involved, there is scope for psychology. Hello everyone, welcome to Beyond the Surface podcast presented by Cognify Studios. Today we have a very special, very special guest with us. She has been my teacher. जब मुझे कुछ नहीं आता था साइकोलॉजी के बारे में तो मैम ने मुझे पढ़ाया, and this is how the journey began. My journey began in the field of psychology. Her name is Dr. Aashna Narula, and she's a young entrepreneur. She has started her own journal. उन्होंने अपना नया जर्नल शुरू किया है लेटेस्ट, एंड उनका एक साइकोपीडिया के नाम से एक साइकोलॉजी इंस्टीट्यूट भी है. Apart from that, she is also mentoring so many other kids as well. And today's podcast is going to be around, we will be revolving around women entrepreneurship in general. And let's get to know about Dr. Aashna Narula. Thank you so much. तुम्हारे लिए मैं सिर्फ आशना मैम हूँ. Time for the two professionals get. So sometimes kids ask, ma'am, Dr. Aashna बोले कि आशना मैम. तुम सबके लिए I will always be. Thank you. Well, thank you so much for that. So, yes. Good. Tiring, but yes, good. It's been like a good journey I've had, and today I feel like quite good. Right. आपसे बहुत टाइम हो गया था मिले हुए को. It's been ages. You kids have graduated in front of my eyes. You kids have post-graduated in front of my eyes. Few of my students, you started your doctorate in front of my eyes. So, it's like, I feel, oh, chalo, but just think. We have grown up. Your kids are growing up. I actually feel, मतलब कितने आगे आ गए हैं ना सब, and sometimes I please अपनी लाइफ में सब सेटल हो जाओ so I can retire. And I think my legacy will always be this. You kids are settled. Yes, of course. So we are there to handle your legacy. Now we are there to take you forward in that matter. True. मैम हम थोड़ा सा यहाँ से आगे पॉडकास्ट लेकर के जाएंगे. हाँ जी. हमारे जो ऑडियंस उनको हम थोड़ा बताते हैं कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप. आपने एंटरप्रेन्योरशिप कैसे स्टार्ट किया? लेट्स स्टार्ट बाय आस्किंग how did you come to know? आपने कैसे साइकोपीडिया स्टार्ट किया? See, so I post-graduated in 2015. तो मैंने अपनी मास्टर्स 2015 में फिनिश कर ली थी, एंड मेरा एग्ज़ाम मई 2015 में फिनिश हुआ था. एंड आई स्टिल हैव दैट इमेज क्लियर इन माई माइंड द मोमेंट आई स्टेप्ड आउट ऑफ द कॉलेज. जैसे मैं कॉलेज के बाहर निकली, ऐसे हिट करा कि अब क्या लाइफ में. एंड आपके MBA फ्रेंड्स सेटल्ड होते हैं, दे ऑलरेडी आर वर्किंग विद द स्टार्टअप्स, दे ऑलरेडी हैव अ जॉब और इंटर्नशिप्स. हम तो लॉस्ट बच्चे थे. फिर घर आके बोला कि क्या करें, एंड हम ऐसा नहीं है कि हर जगह ट्राई नहीं करते. एज स्टूडेंट्स हम हर जगह अपना रिज्यूमे ड्रॉप करते हैं, ट्राई आवर बेस्ट कि यहाँ पे भी अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे भी अप्लाई कर लेते हैं, बट देन यू कीप वेटिंग फॉर द इंटरव्यू कॉल्स. एंड आई थिंक इट्स जनरल विद एवरी किड. हर बच्चा अपनी इंटरव्यू कॉल्स के लिए वेट करता है. बहुत लंबा टाइम हो जाता है, लगता है आज कॉल करेंगे, नो वन कॉल्स. एंड देन यू फील कि हम में कुछ कमी रह गई है, हमारा रिज्यूमे बिल्टअप नहीं है, या ऐसा क्या हो गया. सो आई वाज लाइक नहीं, घर नहीं बैठना, बस घर नहीं बैठना. सो दैट वाज जस्ट द थॉट, घर नहीं बैठना. इस एजुकेशन 5 साल वी इन्वेस्ट इन साइकोलॉजी एंड फर्दर ऑल्सो. सो अब क्या करें.
So I think May 2015, I passed out of my master's, and July 10th, Psychopedia was established. So it took me 1.5 months to do everything. And that was, I still remember, I am fond of kids. So I went to my mom and I said, मैं ना चाइल्ड केयर शुरू कर लेती हूँ. मम्मा कहता है अगर बच्चे को कुछ हो गया ना तो कुछ छुड़ाएगा कौन है. लाइक हाँ ये भी पॉइंट है. लाइक इट बिकॉज आई वाज 23 back then. Right. Just 23 and we are up. It's 2024 going on. We will turn 9th year this time and we'll be turning 10th in 2025. So it's been a journey for me. But then the whole purpose of establishing Psychopedia was कि मैंने अपनी education 5 साल साइकोलॉजी में इन्वेस्ट करे. आई डोंट वांट टू सिट एट होम. मुझे घर नहीं बैठना, मुझे इंटरव्यू कॉल्स का वेट नहीं करना, अपने आप को डाउट नहीं करना है. सो व्हाई नॉट एस्टैब्लिश समथिंग ऑफ माय ओन. And that is how Psychopedia was started. I remember the very first day I came to Psychopedia. मेरा experience कुछ ऐसा था. Okay, you were the young one. I was just 23 when I think I was teaching you all. Right. And just came in, I saw you and I was just thinking कि ये पढ़ाएंगे. मुझे ऐसा होता था, बच्चों के पेरेंट्स जैसे 11th-12th को पढ़ाते थे. सो बच्चों के पेरेंट्स आते थे, कहते आप हो टीचर. मैंने कहा मैं बाल थोड़ी सफेद कर नॉट सिट एट होम जस्ट बिकॉज आई एम टू यंग. दैट इज ऑल्सो द फर्स्ट लेसन आई लर्न कि मतलब कई बार हम क्या करते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज इसलिए जाने देते हैं कि वी फील we are too young to do something, or we're too young to establish something of my own. It was a hell of a journey. मतलब मुझे पता है कि मेरे को 6 months भी survival was very difficult. And you know you're too proud as a kid. नहीं, घर वालों से help नहीं लेनी, तुम्हारा आइडिया था. किसी को let down करने से पहले आपको लगता है खुद को नहीं let down करना. So it was like a task. मतलब I think those 6 months was where I realized, okay, पानी का बिल भी देना पड़ता है, बिजली का बिल भी देना पड़ता है. And because I was the only one when I started and I could not keep the team because I was like, मैं salary दूंगी या rent दे सकती हूँ. So 6 months तो I was like, I still tell my story कि मैंने झाड़ू भी मारा है. मैंने पेरेंट्स के लिए पानी का ग्लास भी उठाया है. मतलब कोई बात नहीं, I will serve the water for you. And those struggles have always kept me humble. मतलब those were the struggles that, you know, remind me कि नहीं, humbleness नहीं खोनी अपनी. Right. This is the spirit of entrepreneurship. When you have nothing, you start with nothing and then you build something. If I talk about like my time in 2015, right, we did not even know कि incubators क्या होते हैं. एस्केलेटर्स क्या होते हैं, फंडिंग क्या होती है. तो अब जाके वी हैव सो मच ऑफ अवेयरनेस कि अच्छा फंड्स भी ले सकते हो, फंडिंग, अपने आइडियाज़ भी पिच कर सकते हो. तो अब तो जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्रेन्योर्स इन जनरल को जो सपोर्ट है ना, वो हमारे टाइम नहीं होता था. हमें पता था कि हमने बस अपनी पर्सनल सेविंग, जो राखी के पैसे, दिवाली के पैसे, भाई दूज के पैसे जोड़े हैं ना, वही हमारी सेविंग है, वही हमारी इन्वेस्टमेंट है. एंड उसी को हमने आगे जाके इन्वेस्ट करना है. राइट. अच्छा, ये सुनने में थोड़ा सा लोगों को लगेगा कि मे बी राखी के पैसे क्या होते हैं, उससे क्या बनेगा, या फिर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होती है, मे बी 10, 20, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख रुपए, इससे ज़्यादा क्या हो सकता. बट देन स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ही वही है कि जब आपके पास कुछ नहीं है तभी तो लड़ने का, वही तो लड़ने का जज्बा है. और आप ऐसे लड़ते हो, ऐसे थक हार जाते हो कि सब मुझसे पूछते थे when I was very, very young. मतलब I still feel that was the time when I stepped into and started to work. I used to see my friends कि अच्छा वो कॉफ़ी जा रहे हैं, वो डिनर्स पे जा रहे हैं, वो लंचेस पे जा रहे हैं, they're enjoying, and here I am, correct, establishing my own business. So it was like a FOMO होता था कि करना भी चाहिए कि we have the time. But I still feel starting young was the best decision for me. And it's not कि आपकी जर्नी रुक जाती है, आप खुद को कैसे ग्रो अप करते हो. So I tell everyone I meet, if you have, अगर आप मुझे 2015 में मिलते ना, I was a very different person. I was a person with low self-esteem and मैं खुद को अपने आप को पहचान रही थी. तो जो मैंने जितना अपने आप को entrepreneurship journey में पहचाना है ना, I think this is my, you know, this is my strength, what I have learned in my entrepreneurship journey. Right. Ma'am, let me just ask you a question about entrepreneurship, young entrepreneurship, right? When you have, आपने तो जैसे बता ही दिया कि आप हमारे टाइम पे इतना कुछ नॉलेज होता नहीं था हम लोगों के, and that is true. जो young entrepreneurs who want to start for that matter, how should they actually start their entrepreneurial journey?
देखो पहली बात होती है कि जब हम एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में जाते हैं ना, हम कई बार बहुत इमोशनल डिसीजंस भी लेते हैं. लाइक द प्लेसेस आई हैव ऑलवेज चेंज्ड इन माय एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी. या जब कोविड हिट करा ना, मुझे लगता था एक इन चार दीवारी से ऑल्सो यू गेट सो अटैच्ड, यू डोंट वांट टू लीव द प्लेस यू आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश. तो वन थिंग आई हैव रियलाइज कि आप जब अपना जर्नी शुरू करते हो, टेक वेरी रैशनल डिसीजंस, डोंट बी वेरी इमोशनल. एंड आई फील इमोशनल होना है, बट अपने सिर्फ विजन और अपने गोल के लिए इमोशनल होना है लाइफ में. और अपनी यू शुड नॉट take emotional decisions when it comes to money, when it comes to your ideas, when it comes to your investment. You have to be practical at certain points. You have to like think through. So first thing, I think everyone जो कि इस जर्नी में निकले हैं, चाहे वो एक मेल एंटरप्रेन्योर है, चाहे एक फीमेल एंटरप्रेन्योर है, या एक स्कूल का बच्चा भी आजकल एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते हैं स्कूल में भी. सो आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज अपने आइडिया पे विश्वास रखना. आई स्टिल रिमेंबर जब हमने शुरू करा था तो सब ये बोलते थे ट्यूशन ही तो हैं, घर से ले लो. द माइंड सेट, राइट? एंड आई एम लाइक नो, ट्यूशंस नहीं है, इट्स अ कोचिंग इंस्टीट्यूट वेयर विल गिव वर्कशॉप्स, वेयर विल ट्रेन स्टूडेंट्स, देयर इज सो मच वी वांटेड टू डू, राइट? सो आई थिंक वो माइंड सेट अगर हम दूसरों का सुनेंगे, तो जैसे कि जब हम एंटरप्रेन्योरशिप को एंटरप्रेन्योर्स को व्हेन आई ट्रेन, सो देयर आर सर्टेन पीपल हु आस्क मैम ये प्रोडक्ट या सर्विस तो ऑलरेडी मार्केट में है. मैं कहती हूँ इवन इफ यू यूज वन सोप, उसका प्रोडक्ट भी तो 10 कंपनीज बेच रही हैं. वो हाउ इट मेक्स यू डिफरेंट, आपके पास कस्टमर क्यों आना चाहिए. सो आई थिंक बी वेरी रैशनल व्हेन यू टेक सर्टेन डिसीजंस, एंड यू नीड टू हैव दैट फेथ इन योर ओन आइडियाज. कोई नहीं रखेगा वो फेथ, आपको सुनने को ही मिलेगा सिक्योरिटी. I'm 32 now, right? So it's been 23 till 32 I've had that journey. Right. But still sometimes I hear from my mother कि UPSC की तैयारी कर लेते, ये कर लेते, correct? So वो चीज़ नहीं जाएगी. And obviously हमें भी compare करा जाता है with people who have good government jobs and then you are an entrepreneur. Right. तो वो आप अपने passion में focused रहो. वो तो you can't make anyone happy. We cannot make everyone happy. Correct. Just be happy. I mean, if you take a decision, अगर आपको decision दे रहे हो, stick to it, stay put to it. Because मैं so much, so मुझे लगता था और हम ऐसे जब अपने entrepreneurship journey में जाते हैं ना, so I hear stories there like कि हम 2 लोगों को let down कर रहे हैं, एक हमारी families को, एक हम खुद को. So I was like, what is worst? You letting yourself down. Correct? आप खुद को let down कर रहे हो. So a lot of us do not take that step towards entrepreneurship also because we feel पता नहीं हम गलती ना कर दें, अपनी जॉब सिक्योरिटी से ना निकल जाए. बट देन अगेन इवन इफ यू हैव अ गुड जॉब एंड इफ यू आर नॉट हैप्पी, वहीं आके खड़े हो जाते हो. अभी आपने बात कही ना कि विच वन इज मोर इम्पोर्टेंट. मेरे को ना एक सडनली एक बात याद आई व्हेन आई वाज इन माय मास्टर्स. तो एक क्लास में सर ने एक बात कही थी कि व्हाइल वी वर लर्निंग अबाउट फॉरगिवनेस, देयर वर 3 थिंग्स दैट यू हैव टू हाउ फॉरगिवनेस वर्क्स. You forgive some other person. Okay. You forgive the world. Yeah. And then you forgive yourself. Correct. The most difficult part is to forgive yourself. Correct. In that matter. आप fail कर जाते हैं, there is still a chance that you can survive. And I tell you one thing, हमारा I think हम Indian families में ऐसे brought up हुए कि हमारा failure ना बहुत ऐसे देखा जाता है, पता नहीं क्या ही इतना. Success is through balance sheets. अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल हो, it's through balance sheets. But I feel I'm successful because I have established my kids. My kids are doing well in their own lives. So as a teacher, I have done my job. I'm the most successful person on the planet. That is the contentment of it. But then when you talk about failure, अब ये चीज़ें ना बहुत subjective है. और हम ये क्या करते हैं, अपना सक्सेस और अपना फेलियर की डेफिनेशन ना दूसरे जो हमें डिफाइन करते हैं उसको लेके चलते हैं. So I think that is one thing that stops us from doing what we love and continue also what we love. So failure क्या है, आपका like आपकी इतनी बैलेंस शीट पे आपका इतना टर्नओवर नहीं है. But failure can be you are doing something which you are not happy at. That is failure for me. That is a failure. Right? So I think I tell everyone कि अपना सक्सेस और अपना फेलियर का डेफिनेशन ना खुद का ही होना चाहिए. जब आपने दुनिया की सक्सेस और फेलियर की डेफिनेशन अपना ली फिर आप उन्हीं के हिसाब से चलते हो. So that is I think one thing I have learned. So अगर हम समराइज करें सारे पॉइंट, it all means कि
make a definition, Correct. be true to your idea, Correct. stay put to it, Very true. and most importantly, stay true to yourself. Yes. And अब compare, अब क्या होता है, like, अगर मैं start करती, तो I was just starting. अगर मैं खुद को उस वक्त उन कंपनी से इस्टेब्लिश करती, उन इंस्टीट्यूट से कंपेयर करती जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, देन मेरे को फेलियर ही महसूस होता. सो द अदर थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप खुद को कंपेयर किससे कर रहे हो. आई कॉन्ट कंपेयर माई सेल्फ विद ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट्स, राइट. सो एक आपका पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई यूज्ड टू कंपेयर माई सेल्फ विद कोको कोला. नाउ व्हाट इज द कोको कोला की स्टोरी. सो हम शुरू में लाइक I still remember my first kids and I think you know them well. तो मैं हमेशा बोलती थी मेरे वो जो first 2 kids जो enter करे and they showed that faith in me, I think I never looked back. Correct. तो हमें ये पता था हमने एक बच्चा भी आ रहा है उसके लिए भी 100% efforts देने, 2 बच्चे भी आ रहे हैं उनके लिए भी 100% efforts देंगे. So I used to go home and जब घर वाले पूछते थे कितने बच्चे आए, मैं उनको बोलती थी कोको कोला ने ना फर्स्ट ईयर में कोको कोला जैसे ब्रांड ने, they just sold 1 bottle. Yeah. In the first year. So it is very important for me to, make that standards also for myself कि अगर Coca-Cola struggle कर सकता है तो who am I? I can also struggle and I can again, rebuild myself. And now Psychopedia is a brand. It is still a big brand. But I think, it's a, I stay very low-key. मतलब you know it. मैं low-key रहना पसंद करती हूँ. Low-key in the sense, I do not believe in marketing the product so much. I still believe in word of mouth. तो जब मुझे मेरी टीम भी कहती है मैम गूगल एड्स रन कर लो, अपना साइकोपीडिया का अकाउंट ओपन कर लो एंड स्टफ, आई टेल देम नहीं, आई वांट टू बी दैट, आई सी माई सेल्फ एज दैट हलवाई वाला पुराना राइट. तो वो जो हलवाई वाला बेस्ट क्वालिटी की मिठाई देता है ना, उसके पास बड़े ब्रांड्स हैं ना, उसके पास बोर्ड है, but then you're talked about generation to generation. So I think I want to be that person. I want to build myself like that with humbleness, with those roots. And I think it's very important कि आजकल हम I think shallow success के पीछे बहुत भागते हैं. मतलब आपके followers कितने हैं. And I am one person who feels एक बच्चे का सक्सेस स्टोरी आ गया, बच्चे की एडमिशन होगी, 2 साल के लिए वो सेटल हो गया या वट एवर, सो यू फील यू हैव जस्टिफाइड योर वर्क. Right. सो आई थिंक that is my energy where it goes. Right. Well, this is something that I need to learn. It comes. It comes with time. It will come to me as well. अच्छा, I want to emphasize one thing over here. आपने बात करी ना कि word of mouth वाले तो marketing, it is the best marketing that can exist. Ever. Why? Because first of all, if you are giving a good product, it will only sell or you'll only make good customers if it is good. और आपके प्रोडक्ट में आपके एथिक्स क्या है. Right. We are in a field where we, हमें तो वैसे अगर लिंक्डइन खोलो तो हमें सिर्फ हम like as a psychology community हम सबसे ज़्यादा बदनाम हैं not following our ethics. It's true, everyone knows we are paying, students are paying for internships. Yeah. There are co-ops there are people who are not trained in psychology and they're still doing psychology, right? So, as a community, how do you differentiate yourself ki no, yes, I support my community, the ethical community, but I'm not going to, compromise on my work values to just bring in, just again, बैलेंस शीट के लिए मैं अपनी एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगी एज अ पर्सन. एंड आई थिंक इट हैज़ गॉन रियली लॉन्ग बिकॉज आई फील जो आपकी पर्सनल वैल्यूज है ना, सो आई थैंक माई पेरेंट्स फॉर वन थिंग कि शुक्र संस्कारों के लिए क्योंकि वही संस्कार ना आई थिंक हम अपने वर्क में भी ले जाते हैं. इफ यू आर काइंड, इफ यू बीन रेज्ड विद अ काइंड हार्ट, इफ यू आर बीन रेज्ड नॉट टू स्टेप ऑन द अदर पर्सन, you take those things in your career also, you take those things in your work value also. मेरे लिए मेरी टीम सबसे छोट, मतलब I am the eldest in my team. I have all women in my team and they're all very young. They're 23, 24, 25, 26. Correct? When I have to address them in the class, I still call them ma'am. ठीक है. सो वो आपकी वर्क वैल्यूज, आप एक कल्चर बना रहे हो, आप एक कम्युनिटी बना रहे हो वे पीपल हैव दोज रोल मॉडल्स विच आर लाइक सिर्फ प्रोडक्ट पे नहीं, कस्टमर सर्विस पे भी ध्यान देना. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब मेरे लिए मेरे एथिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन आई
I'm here. So I tell like, 10 साल मतलब we'll turn 10 next year. So I think I'm going very slow in my life. 10 years may people do have like, I don't know how do they compare themselves. But then again, I feel I'm going very slow in my life and I'm very content. I'm happy. Well, it is very important to build a good team for that matter and to respect them. One thing about success is that it is never alone. It is never yours. आपको बनाने के लिए बहुत सारे लोगों का हाथ होता है. Correct. Especially your team. Your team. Right? Correct. And I am very thankful for my team as well. I am blessed for that matter. This is team. So this is my team. Thank you for sticking with us. And हम अपने I think with every year we turn a year older. So I tell everyone, my students and my team, I exist only because of you all. So my existence is because of the parents that have had faith in me, the students that have had faith in me, my team that have had faith in me. So, and I think once a person joins, na, हमें उसको बाहर ना उसको work culture पसंद भी नहीं आता. We keep everyone with like, रिस्पेक्ट के साथ. आप छोटे हो आप बड़े हो, हम बच्चों को भी वही रिस्पेक्ट देते हैं एंड वी एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स. सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आई डोंट हैव हायरार्कीज इन माय कल्चर और माय वर्क कल्चर और माय कंपनी. कोई हायरार्की नहीं है. वी ऑल आर ग्रोइंग एंड लर्निंग टुगेदर. सो मतलब मैं बॉस नहीं हूँ, मैं एक आशना मैम ही हूँ सबके लिए. और मेरी टीम भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए जितने हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उतने ही इम्पोर्टेंट. आई थिंक the respect goes both the ways and the effort is always the both ways. बच्चा भी उतना ही effort मारता है, हम उतना ही effort मारते हैं. However, there are थोड़े बहुत clashes हो सकते हैं maybe बीच में, but they can be sorted out for that. I think when again जब हम कहते हैं like हमसे जब हम entrepreneurs को train करते हैं तो कई बार मेरे से webinars में पूछा जाता है how do you hire the right team, right? So see, you don't hire the right team, you build the right team. Exactly. तो आप बिल्ड करते हो. अब बिल्ड कैसे करते हो? मैंने किसी को उनकी सॉफ्ट स्किल्स या उनकी हार्ड स्किल्स पे उनको हायर करा, राइट? बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट गोज बियॉन्ड द रिज्यूमे. आई वुड वांट टू सी एक टीच बिकॉज वी आर इन द टीचिंग थिंग, राइट? सो आई वुड वांट टू सी हाउ अ टीचर handles conflict in the class, how a teacher responds to the kid, right? Are you empathetic? Are you more than what your resumes show? तो और हमारा लगता है जब आप अपनी टीम को अपनी कंपनी का विजन समझा दो कि सी एज अ पर्सन, एज अ कंपनी, एज एन एंटरप्रेन्योर, आई विल टॉलरेट दिस, आई विल कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस एंड देयर समथिंग आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन, राइट? सो दैट गिव्स देम ऑल्सो अ थिंक अच्छा ये विजन है कंपनी का. सो कभी भी जब हम अपने बिजनेस से शुरू करते हैं हम हमेशा अपना एक विजन और मिशन स्टेटमेंट इस्टेब्लिश करते हैं, वैल्यू प्रोपोजिशन इस्टेब्लिश करते हैं, लाइक मुझे एंड गोल ये है मेरा, दिस इज व्हाट. एंड विजन एंड मिशन आपको ये भी करता है लाइक इट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑल्सो, आपको हेल्प करता है कि हम डायरेक्शन में ही रहे. सो मुझे पता है मेरे लिए एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक आई स्लीप रियली वेल एट नाइट. मतलब मुझे पता है मैंने किसी बच्चे के साथ गलत नहीं करा कुछ प्लेजराइज्ड वर्क नहीं करा, किसी का काम उठा के किसी को नहीं दिया, which we face it actually we face it in, especially when you move towards your PhDs, we all face it. Yeah, it happens. Right? It happens. So you understand ki bhai, I'm sleeping very well because I have given my 100% to the student, right? And in a very ethical manner. Right. So I think that is very important. आपका foundation क्या है आपके business का? Right. Ma'am, I have two questions over here. First, let's talk about first थोड़ा सा leadership qualities के बारे में बात करते हैं. जी. फिर उसके बाद let's talk about Psychopedia. Okay. The journal thing that you have started, right? Yes. Let's start with leadership skills. Okay. So see, एक होता है जैसे कि देखो, my parents come from a business family and there's a difference between a businessman and an entrepreneur also. Businessman सुबह उठता है, दुकान पे जाता है, काम करता है, वापस आता है, राइट? ही हैज़ कस्टमर्स टू डील एंड इट्स वेरी टू द पॉइंट थिंग. जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो एक विजनरी बोलते हैं. यू हैव अ विजन, यू आर नॉट जस्ट वेकिंग अप एंड गोइंग टू द वर्क, यू ऑल्सो वांट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, राइट? सो आई थिंक दैट इज द फर्स्ट थिंग वी अंडरस्टैंड कि जब आप एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू करते हो और एक एज अ लीडर आप में क्वालिटी होनी चाहिए, आप गिव बैक क्या कर रहे हो, व्हाट इज द इम्पैक्ट यू आर लिविंग बिहाइंड. अब हम कहते हैं हम एजुकेशन में हैं,
और मुझे सब अगर मैं अगेन बोलूँ अच्छा ये कंपनी ये करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये इंस्टीट्यूट ऐसा कर रहा है, बट आई फील नहीं, मैं क्या कर रही हूँ, आई हैव टू बी द राइट रोल मॉडल टू स्टूडेंट्स हु want to aspire or establish their own work like us. So I think one of the important qualities that again एक लीडर में होनी चाहिए वो होती है आप उनको सही रास्ता दिखाते हो. You become the right role model yourself. खुद एक अच्छा इंसान बनो तो आई थिंक लोग भी आपको फिर उसी नज़र से पहचानते हैं, राइट? सो दैट इज़ वन. सेकेंड, आपका विजन. What is it that you want to give back to the society? अब जैसे कि I tell everyone, what is the legacy you want to leave behind? Is it like the buildings you are leaving behind? Like I work from one laptop now. After COVID, we have shifted online. तो हम buildings तो नहीं develop कर रहे, हमारी legacy वो नहीं रही. हमारी legacy क्या रही? हम कैसे psychology community को better कर रहे हैं, या हम कैसे आगे जो यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ट्रेन कर पाए, या उन पे एक इम्पैक्ट छोड़ पाए, या उनको मोटिवेट कर पाए कि वो अपना आइडिया फर्दर इम्प्रूव करके उसे पिच करें और फंड्स लाए, राइट? सो दिस इज व्हाट बीइंग अ लीडर इज. यू आर इंस्पायरिंग पीपल, यू आर मोटिवेटिंग पीपल. एंड द अदर थिंग आई हैव रियलाइज्ड एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, द फर्स्ट थिंग आई teach in my class whenever I have to teach for entrepreneurship, I teach everyone empowerment does not mean कि आप दूसरे को बस ऐसे बोल रहे हो हाँ यार I support you, I support you. It's in your actions, correct? हम कहीं बार क्या करते हैं, हम पता नहीं किसी अपनी इनसिक्योरिटीज अपने लैक में रहते हैं. If someone tells us please can you forward about my product to the other person, can you talk about us, I openly share about students and about their startups, about other women. Even if they're in the same field, I will always share their work on my stories. That is empowerment. तो मेरा कभी ऐसा नहीं है कि just because if I am running an institute and if the other institute is doing well, correct, and if I cannot take the kid, I openly and happily tell the kid, ये रहा मैम का नंबर, आप मैम के पास चल जाओ, she will help you. राइट? तो हमें कोई कंपटीशन नहीं है. एम्पावरमेंट हम कितना बोलते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे यू हियर औरत ही औरत की दुश्मन है. समटाइम्स यू फील इट ऑल्सो व्हेन यू आर इन दिस फील्ड ना, यू फील दैट इनसिक्योरिटी फ्रॉम अराउंड द पीपल. सो आई एम लाइक ठीक है, अगर आप उस हेटरेट का शिकार हो रहे हो ना, यू डोंट हैव टू गिव इट बैक, यू ब्रेक द साइकिल, राइट? So empowerment actually means कि we are not just telling, oh, let's celebrate. I am one person who doesn't believe in celebrating Women's Day because it's every day. It's actually every day. Every day you need the support, right? And the support is needed by your teachers, my whole team is a women team, right? My most of the students, 90% ratio is female student. So we feel, why are we celebrating women's when actually when a kid is reaching out to me and I'm like, no, I will not share your story or I'll not share your product. So empowerment is in your actions, how you empower the other and how you raise the other person. Right. I think that is very important. Right. So being a leader is all about you are open to other people. You are not competitive, you are not insecure. And even if there are people from the same background doing the same thing, and if you know they are doing better, it's okay to celebrate them as well. I also think being from the same field I'm as well. really loved in the psychology community because I'm like, students की voice इन चीज़ों पे मैं बात करती हूँ. I think, But I share. I stay very low-key for this purpose. I also share your idea. I mean, I agree with your idea as well. For हमारी community के लिए ना, for psychology as well. मुझे लगता है कि we are too fragmented, too divided to be one. We are, and I think again, I think one thing I really wish these, I think, जब मैं बोलती हूँ these generation kids, I feel a little old. But I really... No, you're still young. What are you establishing at the end, right? Just suppose if your Insta is taken out, who are you? What is your identity? So I feel even if you have a community, if you're creating a community on mental health platforms, on anywhere, it has to be, you should have a very strong identity for yourself, right? We are running behind shallow following, and I'm very against it, right? So I think I'm
It's been 8 years, and sometimes I have to clarify, established since 2015, just so that person knows that we are old in this field. We are not just newcomers, right? But then I do feel like आप मतलब again अगर आप impact क्या छोड़ना चाहते हो, right? ठीक है, मतलब I see very good students earning very well through whatever channels, but then again in the long run वो चीज़ फाउंडेशन पे है कि नहीं है, वो चीज़ ज़्यादा आगे तक ले जा पाओगे या नहीं ले जा पाओगे. सो आई फील अंटिल माई कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर, आई विल नॉट टेक द स्टूडेंट. ठीक है, तो वो मतलब आपकी क्लैरिटी है कि वी जस्ट नॉट गोइंग टू वर्क फॉर द सेक ऑफ वर्क. So a lot of us share everything on LinkedIn, but I one person again, like, you know, very low key, trying to make it stay very professional and very low key. But then again in the long run I just feel कि बच्चों तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, विजन क्या है. ठीक है, मतलब अपने प्रोडक्ट अपने सर्विस को भी इस्टेब्लिश भी कर रहे हो इन द मेंटल हेल्थ फील्ड, इन द साइकोलॉजी कम्युनिटी, काउंसलिंग भी कर रहे हो, अगर आप क्या इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हो, राइट? बिकॉज आप fizzle out हो जाते हो. I think I've been very low key, I think, and only taking a very, very few students. I think we haven't fizzled out. तो I feel बच्चे क्या करते हैं, एकदम से बहुत एनर्जी के साथ शुरू होता है, फिर वो fizzle out हो जाते हैं. So staying consistent is the key. They don't stay consistent, and I think they have a lot of distractions. हमारे टाइम में इतना हम सोशल मीडिया पे फोकस ही नहीं करते थे. हमारे टाइम में वी हैड ट्रेडिशनल मार्केटिंग ना, न्यूज़पेपर में पैम्फलेट्स. सो आई वाज थिंकिंग वन डे न्यूज़पेपर में अभी भी पैम्फलेट्स आते हैं या नहीं आते. वी फोकस्ड ऑन, you know, being the best, so the word of mouth spreads good. And I think everyone who has reached to us has never reached us through Google Ads. They have only reached us through the word of mouth. Yes, I think that is one thing you want to maintain when you wish to stay in the long run in this business. You don't want to fizzle out. I think that is one thing. Quality over quantity. Quality, yes. It's just That is a good approach actually. Yeah. Okay, let's now move on to the journals. Yeah. हम बताते हैं कि what is journals Okay. and Psychopedia ने क्या शुरू किया. Correct. So see, I'll just tell first, Psychopedia का मकसद था learn, train and heal. So we have this tagline, learn, train and heal. So जब हमने शुरू किया था, वो एकदम नहीं हमने तीनों segments को touch करा. So it is slowly that we went from learning to healing and then training. Right. So that is what we have covered. So basically Psychopedia takes all India entrance skill हम prepare करते हैं for psychology students, right? Any entrance you are preparing for and anything you want to study in psychology, that is what we cater for. Then one thing I love doing in my, you know, as a psychology student, research is very important for us. And there are such amazing jobs opening for research associates, such amazing research projects we get, and they're well paid, right? So you understand कि बच्चे से पूछो आपने research paper कब करा या आता है, उनको AK सिंह के ऊपर कुछ नहीं आता. Are you going to put this? Cut कर दे. So I'm telling you, AK Singh is like the grunt. AK Singh, SK Mangal. उसके आगे, and AK Singh तो चलो SK Mangal तो I still feel, you know, पढ़नी चाहिए stats के लिए. But उनको से पूछ लो ना research AK Singh. मतलब what beyond that, and do you realize that जब हम research को theoretically से practically करते हैं, it changes a lot. So I think I post-graduated in 2015, and I think I wrote my first paper during COVID time. And it was during the COVID. I was like, what to do? Can't, like, you know, we were still taking a decision ki offline jaye, online jaye. It was very difficult time for us. And हमने सोचा क्या करें. So, you know, I sat down. I started reading about research. I started studying about research. I started to write papers. And I think 2015 से लेके when I post-graduated and 2019, you understood, हमने तो कुछ करा ही नहीं research में, except studying AK Singh. What I'm tired of, you know, studying and understanding reliability, validity के. मैं भी बहुत confused हूँ. मैं बहुत confused होता हूँ. उसका मतलब क्या है बच्चे को आज तक नहीं पता. Then what happened? So I was like, let's start with a research training. There are a lot of people who do it now, but
I think I would still take the credit. We started in 2020 and it's been 2024. I am on batch 16 right now. Oh, okay. So batch 16, that means we have published over 100 papers for the students. Wow. And those people who have published their papers, they could get admissions abroad on the basis of this. A lot of us who had UGC paper cleared and they did UGC paper qualified थे, but research paper भी था साथ में, they got jobs in the universities, right? So you understand research करना is so important. It gives you the edge from the other people. Now what happened, we started with research training and it's like takes a lot of energy because हम scratch से start तक बच्चे को समझाते हैं कि this is how you do research, data analysis ऐसे करते हैं, collection of data ऐसे करेंगे and then this is how you will publish. So हम क्या करते थे, जब तक हम बच्चे को train करते थे ना, जब publication का time आया, so publication के लिए हमें उनको दूसरे journals समझाना पड़ता था, this is where you can publish. So I was like, हमने पहले एक problem identify करी, ठीक है? So this is how the entrepreneurship roles come in between when you are a teacher. The problem. You identify the problem. So the first problem was the research is not taught in colleges, ठीक है? I don't want to mean, but I've seen PhD में भी हमें ठीक से नहीं सिखाया जाता. It's a fact, ठीक है? हमें बस I think last में ऐसे छोड़ देते कि जाओ डॉक्टरेट कर लो, अपना थीसिस वाइवा डिफेंड कर लो, बट थीसिस लिख लेंगे बच्चे, रिसर्च पेपर तब भी नहीं लिखना आएगा. ठीक है? सो वी आइडेंटिफाइड वन प्रॉब्लम दैट बच्चों को रिसर्च नहीं आती, रिसर्च नहीं सिखाई जाती. सो वी वर्कड ऑन दैट. हमने रिसर्च पे फिर हमने कहा एक और प्रॉब्लम आ गई कि हाउ डू वी हेल्प देम पब्लिश. सो लास्ट ईयर वी वर लाइक लेट्स डेवलप और establish our own journal. And we established our own journal. So it's a peer-reviewed journal. Peer-reviewed open access journal का मतलब ये होता है कि ये journal आपके online prints में होते हैं and these are available to anyone to read in the whole world, right? And sometimes kids don't even know the difference between index किसे कहते हैं, journal किसे कहते हैं. So they'll come, Scopus में paper publish करना है, हमें उनको समझाना पड़ता है कि Scopus index है, right? Then you even have to explain them the little things कि Google Scholar indexing का मतलब क्या होता है. So अगर आप रिसर्च करते हो, फायदेमंद ही तभी है जब लोग आपका रिसर्च पढ़ पाए. Exactly. Right? So kids are like, again, as I told you, I'm not fond. No one is fond of me in the psychology community. They are obsessed with UGC journals, but they don't understand कि actually में तो obsession is with Indians, the UGC journal. ठीक है? UGC journal की list हमेशा change होती है. They change after every 1 year. So the journal that is there now, it is not sure it will be there in the next year. Right. Now, when a student applies for abroad, my students are in Manchester, they are in King's. They did not care. Those universities, the top universities of the world, they did not care if the paper is UGC. They wanted to see अगर आपने peer reviewed करा है, right? Peer reviewed journal है, आपने research करी है नहीं करी है. So basically why we are so obsessed with UGC is just because we are governed by the UGC body in Indian education. But yeah, so that is one thing. I still struggle with it कि peer reviewed process is very lengthy, correct? And then you have an whole body who keeps an eye on you. ISSN body आप पे ध्यान रखती है. अगर आप गलत प्लेजराइज पेपर्स पब्लिश करते हो, हमारा ISSN नंबर लिया जा सकता है. ठीक है? वी कैन लाइक बी टेकन आउट फ्रॉम. देन आपको इतना क्वालिटी मेंटेन करना पड़ता है कि कल को ओनली व्हेन यू मेंटेन योर क्वालिटी, you Scopus will start picking up your papers. Right. So it's a whole process and it was very, I'm grateful to the team who helped me establish it. It took us 6 months. Oh. So अगर हम थोड़ा सा इसको brief down, अगर हम इसको थोड़ा सा काटे हैं, so what I can understand, even from the entrepreneurial spirit, how to run even a business like journal, yes, even though it is a business or not, let's not dive into that. Yeah. First of all, identifying the problem, Yes. making steps how to solve it, Correct. getting into the domain, and then taking your shot. Correct. Right. So that is what the tagline was, Psychopedia, learn, train, heal. So we started with learning, we give education, Right. correct? Training me, we started with the research trainings and all, correct? We have skill enhancement programs also that we do. And then finally we focused on heal, right? Healing me, what do? We have because
sometimes we are not available for webinars. It becomes very difficult to take out time also because you have so much to do. So I was like mental health में हो क्या अगर mental health field को हमने आगे नहीं लेके गए और लोगों में awareness नहीं बढ़ाई, because you know people also, as person also, if we were not from psychology background, it's very difficult for us someone to understand कि आप depression और anxiety में difference है, sadness or depression में difference है. So the whole purpose of this, it is, we established a website. It's called the mentalhealthworld.com. Okay. So the whole purpose of there is, we have Punjabi blogs there, we have Hindi blogs here, there. We are trying to create that awareness, right? So, and again, अगर उसमें से आप अगर उसको entrepreneurship से देखना चाहोगे, so we are creating a platform which will be like very valuable in the long run. Even if you want to sell it out, the blogs, the website domain itself, because it's the mentalhealthworld.com. So, you know, it has a lot of value right now. So people do that, you know, they buy a domain, which is like the in, and like suppose we talk about mental health. So the moment you add the word to it, the domain is like becomes much more valuable. So I think that is also something you understand. Wow. Yeah. So people have like, yeah, people do this part they like, we are into stock markets and all. People do this, they buy the most like अगर हम बात करें sustainable living की, so go on GoDaddy, buy a domain which is surrounding the sustainable living. आप उसका price देखना. After you have bought it, उसके rates double हो जाते हैं. So if you're buying a domain for 99 rupees, put some time in it and it will go for like $2,000 also. So eventually with time the domains get expensive. I think I bought my domain for like, with the value that you bring into it. Yes. So because of the blogs that we are posting and everything. So I think I bought my domain for 99 rupees. Right now it must be, the domain value itself is at $2,000, which I don't want to sell because I'm creating it for awareness only. But how you understand, like, you know, you're, and again, if you talk about the Psychopedia domain, because we are not focusing and it's just, you know, you are just for the coaching and everything, it's for information based for us, right? It is, I think, not even $100. The main thing that we put so much, it's still of, I think, around $100 only. That is all. But the mental health world domain is like $200 right now. Maybe it is about the keywords too? It's about the, right now, what, like, अगर आप अभी AI bot चल रहा है, right? So if you go ahead and look for a domain name with the AI, you will get it at a very costly price. You will not get it for 99 rupees, especially with the .coms. .coms are Yeah. expensive. So the people do this, like, you know, so जो आपका trending चल रहा होता है, उनके domains ले लेते हैं, and then they sell it after a very, like, they sell it at a very huge price. जैसे we have retailers, अपनी market में बैठे होता है ना, इस building को ले लो, उस building को, so they have it on domains also. Yeah. This is cool. Yeah, so it's very good also. People do invest a lot of time in establishing it and buying those domains and then, you know, negotiating it, actually reselling it at a very higher value. So it is like bringing a value proposition to it, Yes. building it, and then selling. It is similar to building a product, right? Yeah. Right, no? But then you are not doing there anything. Now you are just getting a domain. So there's a lot. I think I feel we are still in a bubble. I think हम growth को नहीं समझते, हम ये नहीं समझते market में क्या चल रहा है. We are just in a bubble. So I think the other thing a lot of us, you know, not do well is the market research. I think the last market research was in 2015, and then you understand it. Verbally you understand कि अच्छा, this is what the market requires, this is what the psychology student requires. But now and then doing market research, आपके customers को क्या preference है, right? So I know a lot of students need internship. ठीक है, तो मार्केट रिसर्च में अगर मैं डालूंगी भी ना कि बच्चों को क्या ज़रूरत है, वो बोलेंगे इंटर्नशिप्स, बट वी नो वी कैन नॉट. आई बिलीव कि आई हैव अ रिज्यूमे, मेरे रिज्यूमे में एक भी इंटर्नशिप नहीं है. सो आई टेल स्टूडेंट्स, यू नो, इट्स योर स्किल्स, it's how you carry yourself, how your concepts are, what is your, you know, life purpose, that takes you beyond all of this. आप internships में कर क्या रहे हो? At the end, एक पेपर ही है ना, हम
डॉक्टर डिग्री ही है ना, बट उसको मैं कैसे यूज़ में ला रही हूँ. I have done my doctorate on entrepreneurship. So I think it was very important कि अब if I have invested my years in entrepreneurship in PhD also, so now how do I put it into my education? It doesn't just have to be degree. So kids don't understand कि skills आपको life में आगे ले जाते हैं, आपकी vision क्या है, आपका mission क्या है, वो आपको आगे ले जाते हैं. Rest, I think everything is you can build upon. It is. Someone said that it is a piece of paper. It is a piece of paper. Piece of a paper. It matters, but then it is a piece of paper. It is who you are. Yes. In all. Obviously, हम जब resume देखते हैं तो we say, oh, this is first impression is a resume. But then again, when you are into this work for a very long time, you understand there's a lot to a person beyond this resume. Who you are as that person is very important. And when you, when you do well in life, when you are also successful in life, I again feel कि मतलब आप अपनी पहचान नहीं भूल सकते ना, आप वो स्ट्रगल नहीं भूल सकते कि आपने झाड़ू पोछे भी मारे अपने ऑफिस में. You cannot let the success get into your head. Right. So everyone, if you अगर आप किसी से बात करना चाहते हो तो every director has a PN to attend the calls. I am always the first person who picks up the call. I'm still the person that everyone can have the direct reach to me, because this is how we build true connection. This is how we build a community. Exactly. I really so appreciate हम अगर बच्चों से ही आगे बढ़े तो हम उन्हें neglect नहीं कर सकते. And sometimes I do have very bad burnout. And I'm thinking, everyone sees my WhatsApp status. I think everyone is used to it. कि नहीं आज मैम available है. So I just put up a status, not available today. I need that downtime also, because it gets hectic. नहीं, अभी आपने बात कही about, see, it gets really difficult for me to reject a resume. But when I'm going through a resumes and seeing कि इसने ये भी किया है, it is like good, अच्छा, okay, good. So what I do is I confine थोड़े बहुत CVs देख लेता हूँ कि 4-5 CVs, and then I see कि इसने ये किया, what do I need? And फिर it comes to shortlisting. Yeah. And then I see कि ये सिर्फ CV नहीं है, ये एक बंदा है. अभी तो हम जो कर रहे हैं, what we are trying to do, what we are trying to achieve with our company is something else. But there are still limitations. हमारे भी कुछ limitations हैं. True. And वहाँ पे आपको ये चीज़ खलक जाती है कि काश थोड़ा सा हम लोग और बेटर होते तो हम लोग कुछ और इससे भी बेटर कर सकते हैं, इसको भी करवा सकते हैं, इसकी भी कर सकते हैं. At the end of the day, being from the psychology community, हमारे अंदर शायद ये है to help everyone way. Yeah. So what happens when we get resumes, I tell them I don't have vacancy. Whenever I don't have vacancy, I don't have vacancy, right? So I tell them कि see, you send me your resume, जहाँ opening होगी, I will forward it there. So I do that also. I forward jobs to the kids. I try and spend 15-20 minutes of my day just to look for job for the students. So we have created this community on WhatsApp where, we just post jobs and free webinars for the students to grow. मतलब जहाँ मेरे को जॉब दिखती है, जहाँ कोई ओपनिंग दिखती है, रिमोट है, हाइब्रिड है, I just blindly forward it to the student कि देख लो, reach out. And then the other thing I realized, like someone sent me a resume, someone sent me a job opening yesterday and बच्चे ने कहा मैम अपने ग्रुप पे भेज दो, किसी के काम आ जाएगा. मैंने कहा ठीक है वो तो मैं भेज दूँगी, but why are you not applying yourself? तो बच्चा कहता मैम कहाँ से रिप्लाई आएगा. So the other thing I've realized in this, being as a teacher also I've realized कि हम ना self reject करते हैं खुद को. मतलब मुझे नहीं क्या पता resume accept हो जाए, what is the worst that will happen, correct? So I tell students when we I think one thing I really want to train students is professional development. मतलब बच्चे lack करते हैं वो psychology field में, they will write empathy in their resume, but I think they really need to work on it. Communication skill कर देंगे, and again they lack communication skill, right? So I think it's very important. Why are you self-rejecting yourself? So I teach my students ki what is the worst that will happen. Call नहीं आएगी ना, आपको पता चल जाएगा it's not meant for you. The company is not looking for a candidate like you, but that does not reflect on you na. So I remember when we take interviews and sometimes I have to say no to someone, I very politely write, please do not take my rejection or take company ka no to your heart. No one does that, but I make sure कि मेरे no से किसी की self-esteem नहीं टूटनी चाहिए. I maintain that. I have also written those emails where I have written कि I'm sorry that you have. Just as
if someone has taken out time to apply to your company, you also tell the person कि नहीं हमारा vision शायद match नहीं करते, not the candidate I'm looking for, correct? But that does not mean that you're not good enough. You just don't take my company का rejection on you and continue to apply everywhere else. So kids, like, they self-reject themselves. And because you have given me a platform today, something I really want to bring notice to you. I have recently seen that therapist के पास सबसे ज़्यादा psychology students ही जा रहे हैं. And it's really sad. If I talk to any psychology student ना, वो हमेशा मुझे बोलेगा I am seeking therapy. I am going to counseling, I am seeking therapy, or I am on medication as a psychology student, right? So I feel हमने तो strong होना है to help the other person ना, but it's like something is in the air, or you कहते हैं ना एक wave चली हुई है. Right. The wave is, see, I don't know how people take it on the podcast or anything, and I know that students will agree also. Young students, as young as 21, 22, psychology, they are on medications, anti-anxiety, antidepressants, going for therapy. And I sometimes wonder what has happened with you in life. मतलब ऐसा क्या हो गया that you have to see so much in life, right? So I feel very sad कि हम अपनी strength को ना अभी तक bank upon नहीं कर पा रहे. And a lot of us leave see, I knew in my college I cannot work in hospitals, so clinical setup is not for me. Exactly. वो awareness थी मुझ में, self awareness थी. और ऐसा नहीं कि मैं थेरेपी भी नहीं गई हूँ, मैं गई हूँ, but there came a time I panicked upon my inner strength also, right? So sometimes you feel अगर कोई मेरे पास आ रहा है, if I am a mental health professional, if you're coming to me, right? अगर मैं अपनी प्रॉब्लम से इतनी जूझ रही हूँ और उनसे निकल नहीं पा रही हूँ, I will never be able to do 100% justice to my client. So I don't do counseling anymore because I know I have a lot of burnout in myself, and there are times I get absorbed in the secondary trauma जिसको हम कहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे लिए. I cannot create those boundaries. So I took a step away from counseling. I knew ठीक है मैं किसी पे, because if I am struggling with something, I will not do that injustice to my client. So if psychology students are there and you're listening to me, I really hope you bank upon your strength, because as a teacher, मतलब हमने तो 23 में अपना बिजनेस शुरू कर लिया था, इतनी स्ट्रगल्स देखी हैं. There were times when you were like बंद कर देते, क्या ही मिल जाएगा. फिर तो हम भी हर जगह थेरेपिस्ट और साइकाइट्रिस्ट के पास जाते ना. हम खुद को बिल्ड करना है ताकि we are that community that has to stay very strong. Exactly. So I think I was doing this students के लिए ना, and sometimes whenever I have time I log in and tell them, ask me your doubts and let me see your resume. I just log in and tell them, come show me your resume, tell me where you are facing difficulty in your professional life, because I think that is the only time I can actually give back to my own students कि बताओ मुझे कहाँ दिक्कत हो रही है. So, when you hear them out, oh man, I'm going to therapy and all, I'm like, but see, you're 21, I understand, हमें support है. But if you have a support outside, you cannot, forget to bank upon your own support. Correct? हमने, I think, mental health field को ना बहुत ज़्यादा glamorous भी बना दिया है. It has become nowadays. But that is, I think, it's backfiring to a lot of us. ऐसा नहीं, मेरे पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम्स नहीं हुई है लाइफ में, हुई है ना. they have seen the worst, right? Actually when you hear them out, they must have had really, and 21 में तो यार उनकी शादियां हो गई थी, बच्चे हो गए थे, they were settled, they had built houses in that age. They did, I know that they have troubles and they have carried it till here, the traumas and everything, right? But if you ask me if I'm at 21, I don't want to go to therapy. I'm telling you I don't want to go to therapy, not because I feel judged, but because I feel I'm just 21. अभी मैंने दुनिया ही कहाँ देखी है. I still feel I'm 32, I haven't seen the world, right? So I feel when you have the support outside ना, mental health के नाम पे, हमने actually उसे बहुत ज़्यादा ही bank upon करने लग गए और अपनी inner strength भूल गए. So I do have difficulty accepting it. If I have to clarify things or bring it into the right picture, what we mean is to, अगर आपने कोई चीज़ सीखी है, and if you know what your strengths are, and if you very well know the subject of psychology,
we need to rethink what we are diving into. Yes, I still remember when I seek therapy first time, right? I was sobbing on the call with the therapist, or when I went to the psychiatrist for my help, whatever. I was very honest that I'm a psychology student. I hope I'm not doing student syndrome with myself, right? But there came a time, I just snapped out. I was like, I don't want to seek any therapy. Just because you have a support outside available, right? I will forget my own inner strengths, right? I know therapist, but again, मुझे नहीं पता आजकल बच्चे कितने trained है to take clients at their end, right? मुझे ऐसा होता है अगर हमें कोई आता है मैम बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया आपने बात करने के लिए. because you know it is like I honestly जब मैं काउंसलिंग करती भी थी, मेरे पास कोई रेफरल आता था, मैं सबसे पहले पूछती थी आपको कौन चाहिए. वो कहते थे साइकाइट्रिस्ट. मैं कहती थी आपको इश्यू क्या है, आप मुझे डिटेल्स मत दो, आप बस बता दो, देन आई कैन टेल यू. डू यू नीड अ काउंसलर, डू यू नीड अ साइकोलॉजिस्ट, डू यू नीड अ साइकाइट्रिस्ट? What are we doing? We are just in the field for the sake of doing. I'm telling you, I'm a very vocal person when it comes to it कि गलत मत करो किसी इंसान के साथ. If I am not healed enough, I do not have the right to heal the other person. ठीक है? So It is effect. yes, It is I effect. know I cannot go to the OPDs and all. तो मैंने every Even psychology में बहुत पैसा है. Even I backed out from that. I have done my internship. हमें तो internship करना ज़रूरी था in my masters. It was in a hospital. But my goodness, मैंने कान को हाथ लगा दिए थे कि this is something not for me. Self awareness is very important ना. अब मुझे अगर हमें कोई पूछता है आप रेफर कर दो, मेरे को रेफर करने में भी डर लगता है. मैं किसी को कहीं रेफर कर दूँ, करेक्ट, एंड अगर वो उसको मेडिकेशन सूट ना करे, किसी साइकाइट्रिस्ट को, उसको सॉल्ट ना सूट करे, उसको साइकाइट्रिस्ट ही ना सूट करे, ठीक है, या अगर मैं उसको थेरेपिस्ट दे देती हूँ, थेरेपिस्ट जो 100% जस्टिस ना कर पाए, तो मैं नहीं देती. कई बार मैं रेफर भी नहीं करती कि प्लीज़ आई डो नॉट वांट टू सेंड यू टू द wrong person, give me some time, let me find out the right person and I will refer you. And this is the very big reason we need to have right therapists. Now there are हमारे कितने, आप बताओ, ठीक है, it's like young counselors कितनी एज के? 23 23 who are they counseling? 23 24. So हम क्या बोलते हैं कि experienced person है. It's not that people are doing very well in the counseling field. Very genuine people. Few of them are very genuine. Few of them are doing very good and they have already done 300 400 sessions and they are clear कि हम 8 young adults लेंगे, हम उसके ऊपर लेंगे ही नहीं. So कहीं लोग इतने ethical भी है, वो आपको बोल देते हैं we are not going to take you as a client because this is the problem I can help you with. This is the age gap I am dealing with. उससे आगे I will refer you आगे. ठीक है? वो एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ साइकाइट्रिस्ट, एज अ थेरेपिस्ट हमारी ड्यूटी है टू बी ऑनेस्ट विद द क्लाइंट. मेरे पास क्लाइंट आए जा रहे हैं, मुझे पता है वो उसको डील नहीं कर सकती, उसकी हेल्प नहीं कर सकती, मैं ले ही जा रही हूँ, सेशंस ले ही जा रही हूँ. यू आर नॉट डूइंग जस्टिस, राइट? सो आई थिंक अगेन माई फाउंडेशन गोज बैक टू माई एथिक्स. मतलब मुझे पता था कि मैं अपनी प्रॉब्लम से डील कर रही हूँ. एंड राइट नाउ ऑल्सो समवन रीचेज आउट कि मैम आपसे ये काउंसलिंग करनी, मैं बहुत क्लियरली कह देती हूँ लाइक आई एम नॉट डूइंग द काउंसलिंग एनी मोर, आई हैव टेकन अ स्टेप बैक फ्रॉम द काउंसलिंग, टेल मी योर इशू, आई विल रेफर यू टू द राइट पर्सन. हाउ डिफिकल्ट इट इज. अगर मैं सोचूँ मेरे इतने सेशन के पैसे जा रहे हैं, देन अगेन इट्स वेरी रॉन्ग, राइट? It is true. Yeah. I'm sorry, but people do that. Yeah, people do that and we Right. want to do that, right? So again, तो हमें लगता है कि हम हैं लोग ही रह रहे हैं, बट वी आर डूइंग वेरी वेरी शांति वाला अच्छा काम. What I think कि शायद जो regulations right होनी चाहिए ना, अब अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने नहीं, आई थिंक दैट द पॉइंट, that is the point. But अगर हमें हम बच्चों को regulations सिखा रहे हैं, काउंसलिंग डिप्लोमास इज मैंडेटरी फॉर स्कूल्स, Right. ठीक है. न्यू हम कितना ही कट कर लेंगे फुटेज, बच्चों सबको सुनना चाहिए. टेलिंग यू, हम सबको बोलते हैं डिप्लोमास आर इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है. यू विल नॉट गेट इट टू द CBSE और द स्कूल्स बिकॉज यू डोंट हैव एनी डिप्लोमा. डिप्लोमा कंपल्सरी है. काउंसलर, what skills do they teach you in diploma? They teach you that घिसा पिटा syllabus again. I did not do diploma in counseling because I was very sure कि Right. डिप्लोमा नहीं करना, क्योंकि वही मास्टर्स में पढ़ना है, वही डिप्लोमा में पढ़ना है. Exactly. I did work as a school counselor because of my skills, right. right? But not because I had any diploma or something. Right. But then again,
हम कर क्या रहे हैं, मुझे तो यही नहीं समझ आता. तो समथिंग इट्स लाइक अगेन व्हेन यू इट्स ट्रिगरिंग. It is. ट्रिगरिंग फॉर मी. लाइक आप डिप्लोमा कंपल्सरी कर रहे हो, ठीक है, बच्चों को तब भी अपना क्लाइंट हैंडल करना नहीं आ रहा है. नहीं आता. बच्चे कॉलेज स्कूल में डिप्लोमा की उससे अपनी वो तो चले जाता है, हायर तो हो जाता है, उसके बाद कॉल्स करके बोलते हैं कि मैम पेरेंट आ रहा है, बच्चे को इशू है, डील कैसे करें. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ. वी आर जस्ट ऑन अ वेरी शैलो लेवल इन दिस फील्ड. एंड आई थिंक आई रिमेंबर कई बार आई टेल माई टीम, यार कई बार ना फील्ड से दिल से उठ जाता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं. वी वॉन्ट टू बी द राइट रोल मॉडल्स. वी वॉन्ट टू टेल किड्स कि गलत काम मत करो बच्चों. मतलब a very quick success in the long run will fade. Go slow, अच्छा काम करो, ठीक है. I'm sitting here because I've given this field my 8 years of my life, 9 years of my life, right? तो मुझे पता है, अगर मैं जो यहाँ बोल रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. हमारे पास 2015 में we don't even know what is Google Ads. नहीं पता था हमें क्या था. इंस्टा फीड्स कैसे रन करते हैं नहीं पता था, ठीक है. हमें ये पता था कि हमें बिल्स देने अपने, और अगर हमने अपना 100% नहीं दिया तो कल को बच्चे इनरोल नहीं होंगे. राइट. सो माई थिंग हैज़ ऑलवेज बीन कि शैलो काम नहीं कर सकती. जितना है उतना ही करूँगी, जितनी कैपेसिटी उतनी ही करूँगी. राइट. एंड जस्ट बिकॉज for the sake of doing it, you should not be in any career field. It's not just psychology, but I just feel like, there's a lot of, sometimes my students tell me, ma'am, there's a lot of in-group and out-group in psychology field also. मैंने कहा, मैं ना इतना बाहर रहती हूँ ना इन चीज़ों से कि मुझे वो चीज़ कभी फील नहीं हुई है. But then again, in the long run, as a psychology, हम ये कहते हैं कि हम कितना रोना पीटना शुरू करते हैं ना जब हम कहते हैं हमारी टीचर्स कार्ल रॉजर्स पढ़ाते हैं और हमें जीरो एम्पैथी मिलती है उनसे. वी हैव फेल्ड एज अ साइकोलॉजी प्रोफेशनल ना. Even after putting a doctor in my name, I never put psychologist. I only call myself as a psychology professional. कितने लोग हैं जो बाहर psychologist use करते हैं without having the proper degree and all. Exactly. Right? बहुत ज़्यादा. And a person who is just lost and who needs help, he will come to you, na? But at what cost you are taking that person? मतलब instead of just helping, you will do more damage. You will. So that is what I was always clear कि if I am dealing with something of my own, I cannot give you my 100%, and I step back from that counseling. And I did step back. I could either be a counselor, I could be a good teacher and entrepreneur. So I chose to be an entrepreneur and teacher. मैम मुझे पता क्या लगता है, I was reading it somewhere, ये idea मेरे को आया नहीं था, I read it somewhere, कि wherever human mind is involved, there is scope for psychology. हाँ. Psychology is not just a subject कि आपको सिर्फ teaching में जाना है. You can only be a counselor, you can only be a clinician, Yeah. you can do more things with that. Researcher. You can be a researcher, a organizational psychologist. There is a student who is preparing for educational psychology. I feel so happy कि मतलब thank God वो usual stream से हट के कहीं जा रहे हैं. I think even given a chance, I would love to study educational psychology and all, because and you cannot stop growing. ऐसा नहीं, मतलब हमें कई बार मेरे पास कई बार इतना खाली टाइम होता है ना, sometimes I'm like अब क्या करें. मतलब जब PhD कर रहे थे ना, लैपटॉप खोल के सिर्फ लैपटॉप पे घंटों काम करते रहते थे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर ढूंढते थे, लिखते थे. अब कई बार ऐसा खालीपन सब महसूस होता है कि अब क्या करें. काम करने की आदत पड़ी हुई है ना वो. Yeah, so you understand, but then ultimately I knew कि मुझे डॉक्टरेट सिर्फ one, because my field was entrepreneurship and I wanted to study entrepreneurs, and I found such amazing results also in my in my PhD. Right. In the long run, now it's a degree, right? मैं या तो दीवार पे एक्चुअली फ्रेम करके टांग सकती हूँ, या मैं एक्चुअली में जो मैंने अपने 6 साल लगाए हैं अपनी PhD में, Make it use. उसे आगे, like I train other students, I train people for entrepreneurship and all. This is how you put your education, right? So I think the FOMO is so much in this generation कि वो बंदा LinkedIn पे ये कर रहा है, वो बंदा Insta पे ये कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रही. I tell my kids, I want you to establish yourself, but not at the other person की cost. Don't do that. Right? So I tell them, ये कर लो, ऐसे मत करो. This is what you can post on Insta on mental health. Don't post this on mental health. Right? This is how you need to be professional on LinkedIn and everything. I do guide them, but not at the cost of the other person. Never do that. It will not go. I believe in, I'm
a spiritual person उतना, so I believe everything is a karma. So मतलब मैंने किसी client के साथ बुरा करा या उसको justice नहीं करा, It'll come back to you. वही है ना, मैं अपने संस्कारों को थैंक यू बोलती हूँ. भगवान का डर भी है कहीं ना कहीं कि गलत नहीं कर सकते, ठीक है. एंड दूसरा, अगेन इट्स कर्मा. आई कैन, इफ when I was a student, I struggled, right? तो the only time I give my 100% understanding, empathy. मैं भी उस जगह थी. Exactly. मैंने भी धक्के खाए हैं. So sometimes I had this whole post on LinkedIn and the students were so picky to comment on it because, you know, it goes to the other feeds also. So I remember I was like talking कि हम बोलते हैं, हमें Carl Rogers has been like, you know, empathy, unconditional positive regard. But the moment a teacher becomes a supervisor, वो चला जाता है. वो चला जाता है. Because why? Because, you know, you're not, आपको वो नहीं, आपको प्रेशर लेने की आदत नहीं है ना. Right. जो हमारे गाइड्स बनते हैं, right? Touch wood, I've always been blessed with great guides in my life, right? The same here. हाँ. Not for the saying, or for the camera, not for it. Yeah, The man, it's true. Right? So you understand कि अब teachers पे, if I am teaching the Right. same syllabus, Right. since the institute has been established, वही पढ़ रहे हैं ना. Nothing has changed in the syllabus. So it's like it's on a, हमारे मुंह पे वो syllabus रटा हुआ है, हम पढ़ा सकते हैं. हमें शायद आप before the class prepare करने की जरूरत भी नहीं पड़ती. We walk into the class. Yeah, we know. Yeah. But the moment there's research, extra load is given to the teacher, you see the worst side of her. Why? Because नहीं है आदत pressure लेने की. Right? So you feel, sometimes I tell kids, तुम्हारा बस चले ना, तुम अपना dissertation ना मुझसे WhatsApp पे लिखवा लो. Right? So I tell them, ठीक है, if I'm here to help, and I know why I'm helping you, because I have struggled as a student. Right. मतलब I've struggled to find a skill also. We have been there na, so you want to help the other student. Right. नहीं यार, I have been through it. I can do my maximum for you. I will find a skill. Take me 2 minutes to find your skill. I will give that to you. So what is the least you can do? Right? आप कितना कर सकते हो? हम free webinars करते हैं. Free webinars में also we have students कितने? 20 turning up, right? But the moment same thing is done for 200, 300 rupees, kids are going. Yeah. Because the mindset is that ना कि अगर आप charge करो आप better दे रहे हो. Exactly. But kids don't understand we are here in this field for so long and we have the experience, and our webinar are on the basis of what the student requires. So we take a poll also. What do you want to learn? Dissertation period चल रहा है, चलो dissertation का free webinar कर दो, ठीक है. आपको समझ नहीं आ रहा कि अपना काउंसलिंग सेटअप कैसे शुरू करो, किस एथिकल वे में ऑनलाइन टेलीथेरेपी शुरू कर सकते हो, वेबिनार कर देते हैं. वी डू हैव टीम, राइट, एंड आई कंपनसेट फॉर माई टीम, बट आई हैव अ वेरी क्लियर रूल कि इफ आई कैन गिव बैक टू माई स्टूडेंट्स आई विल नॉट चार्ज. एंड वी डू फ्री वेबिनार्स. उनको ये भी सिखाते हैं फ्री वेबिनार्स में लिंक्डइन पोस्ट कैसे करते हैं, अपना यू नो हाउ डू यू मेक अ रिज्यूमे. वी डू अ लॉट, बट देन अगेन because we stay so low-key and ethical, हमने वो, I think we are not like, it's just हम थोड़ा dim light में रह जाते हैं. We are doing a lot for our students. मैं एक सही बात बताऊँ, psychology as a field, I have also discussed, I did a recent podcast with Amit Pawar. Psychologist Amit Yes, Pawar. So he's a known fellow in psychology. मैंने खुद उनकी एक दो कुछ वीडियोस देखी हैं. हाँ. He teaches well. Yes. मेरे को थोड़ा कुछ रिसर्च के बारे में समझना था, तो उनसे उनकी वीडियोस देख के मैंने समझा. अच्छा, I also mentioned it with him that we in the field of psychology, we need psychologists, good professionals जो कि सामने आकर के psychology field को आगे लेकर के जाएं. पर हम तो कर रहे हैं ना वो, सपोज हमें. आप मतलब आप कर रहे हो, you are a pioneer ना, you are already established and you are a pioneer in But that we field. don't even get the support from our own colleges. You are doing well. What alumni you are? It's a message to the colleges also. Right. अपने ना वो actors की alumni को ऊपर उठ के देखो. There are students who have built themselves. Right. They don't do that. And then proudly if you do well, they call you the alumni, na? But when it's time for the college to give you back, are they giving us the back? No. I tell it openly. I am an alumni and where is my respect? So I tell them, like, you know, but does that
make me stop from doing what I want to do? No. Does that make me any less than the other person? No. But then आपका जो support मिलता है ना आपको, right? It's very important. So I think I have banked upon that inner support. I have banked upon my students' ka faith in me, and I think I am just going. I wake up every day and I start my day. That is all. Even same चीज अमित पवार जी ने कही थी. He said कि बहुत लंबे टाइम से ना the credit and the respect that is due जो हमको मिलना चाहिए वो नहीं है, वो नहीं मिला है. वो मिलेगा भी नहीं. And it's okay. I think you will not. I know credit और ड्यू रिस्पेक्ट आप कहाँ से ला रहे हो, किस गवर्नमेंट से ला रहे हो जो कि मेंटल हेल्थ मानती नहीं कंपल्सरी फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है, या अपनी टीचर से ला रहे हो जो कि काउंसलिंग. वी डोंट हैव काउंसलिंग सेल्स इन आवर कॉलेजेस, वी डोंट हैव प्लेसमेंट सेल्स इन आवर कॉलेजेस. मतलब हाउ डू यू एक्सपेक्ट माई मास्टर्स डिग्री टू बेनिफिट मी व्हेन यू डोंट हैव अ प्लेसमेंट सेल इन योर कॉलेज? सो नाउ आई हैव चेंज्ड माई परसेप्शन. आई टेल स्टूडेंट मास्टर्स के बाद ये देख लेना प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि आप मास्टर्स इन आर्ट्स के बाद आपको प्लेस नहीं करते हैं, राइट. बट व्हेन यू चूज योर फील्ड नाउ, व्हेन यू चूज योर कॉलेज नाउ, मेक श्योर कि आप कहीं प्लेस हो. आप फिर वही 2 साल बाद वहीं खड़े हो लाइफ में, वहीं खड़े हैं ना हम. कई बार आई फील या ना आई हैव डन माई PhD in my entrepreneurship, my organizational psychology. There are people who are doing diplomas, correct, with B.Tech. वो B.Tech के लोग हैं और वो साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, राइट. नाउ वी फील वी डोंट वांट टू डीमीन एनीवन. हमने डीमीन नहीं करना, हमने किसी को उस नेगेटिविटी में खींचना नहीं, ना उनकी नेगेटिविटी में जाना है, राइट. बट हाउ डू यू स्लीप? आप कैसे सो जाते हो किसी के साथ? लाइक हाउ डू यू, लाइक आई जस्ट वांट टू आस्क, लाइक आप कैसे, मतलब हाउ डू यू स्लीप वेल व्हेन यू आर डूइंग इनजस्टिस टू द किड? Exactly. I feel like my degree is crying in the corner. I believe psychology field की वो जो respect है that is also due. It's, people who are doing unethical work, right, and they are good on the social media, they are getting that due respect. Right. Very true. Very true. जो दिखता है वो बिकता है. But I don't want to dichify. Correct, मुझे नहीं दिखना है. Because I'll tell a lot of... Ma'am, but please... Should I suggest one thing? Yes. Please do. See, I'll tell you one thing. When you wake up in the morning now, when I switch on my WhatsApp, right, I can do 2 things. ठीक है, मैं अपना रील कंटेंट बना सकती हूँ और I can create a short reel for video or for YouTube, right? या वो जो 20 मैसेजेस जब तक मेरा फ़ोन ऑफ होता है उनकी क्वेरी सॉर्ट कर सकती हूँ ना. I choose that. So my energy, I know I've tried a lot of time to establish our YouTube channel where, we can help the students genuinely छोटे concepts समझाने का. But in the long run, I understand कि मैं वो ही energy ना, हम मास्टर्स पास आउट हो जाते हैं. कई बार मुझे बच्चों भी लगता है, बच्चों तो मतलब गूगल करके, मतलब बच्चों को आफ्टर मास्टर्स ऑल्सो दे डोंट अंडरस्टैंड व्हेन दे हैव टू अपेयर फॉर नेट एंड व्हेन दे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट एंड JRF? नाउ टेल मी. डिग्रीज है, अवेयरनेस नहीं है. बच्चों को एलिजिबिलिटी भी नहीं पता होता. एंड आई थिंक आई ऑलवेज से टू माई किड्स स्पेशली, आप लोग सेमेस्टर टू सेमेस्टर जी रहे हो. यू आर जस्ट सर्वाइविंग सेमेस्टर टू सेमेस्टर. यू डोंट केयर अबाउट अ लॉन्ग टर्म गोल. यू डोंट केयर अबाउट आपने किस उसमें जाना है. सो रिसेंटली आई वेंट टू बॉम्बे एंड आई वॉज लाइक मेरा ही बबल टूट गया. यहाँ क्या है, वी लिव इन चंडीगढ़ और वी हैव लाइक वी हैव, हम जा रहे हैं ऑफिस, है ना, एंड विल बी देयर इन 15 मिनट्स. मुझे मेरे घर से ऑफिस 15 मिनट लगते हैं, ठीक है. सो आई बी हियर, देयर इज नो ट्रैफिक, नथिंग. एंड देन वी हैव अ वेरी बैलेंस लाइफ ऑल्सो. लाइफ स्टाइल मेंटेन कर लेते हैं या सब कर लेते हैं. चंडीगढ़ इज अ बेस्ट प्लेस फॉर दैट. या ट्रू है ना. सो वी हैव लाइक अ वर्क लाइफ बैलेंस भी हो जाता है. 9 बजे भी लैपटॉप्स बंद करते तो उसके बाद भी वी आर लाइक ओके वी कैन डू आउट, राइट. अब बॉम्बे के बच्चे, I feel the one thing I came back and I told my kids, come out of your bubble. बॉम्बे में बच्चे 2 घंटे की मेट्रोज लेते हैं, 2 घंटे की लोकल ट्रेन लेते हैं. Sometimes the class starts at 7 AM, right? And the teacher is also making an effort to take the class at 7 AM. अगर वो बच्चा 7 बजे से कॉलेज पहुँचना है तो 5 बजे की लोकल ट्रेन लेके 7 बजे कॉलेज पहुँच रहा है. उसके बाद ऑब्वियसली बिकॉज द एवरी थिंग इज सो फार ऑफ, ही जस्ट गो वंस ना. वो रात को 10 बजे घर जाता है इंटर्नशिप करके, पढ़ाई करके, लाइब्रेरीज में बैठ के. तो हम क्या, मतलब हम तो बहुत
बहुत ज़्यादा बबल में रह रहे हैं. We are in a bubble. So I tell my kids, all you have to do is something to just log in and learn. That also you can't able to do. Now that is not fair to the ones who are working hard. And now if you have a sifarish, you will go आगे. वो बच्चा जो कि 2 घंटे थक के खा रहा है ट्रेन में, that person deserves to be in that job. And I can really say, you will go आगे. I can really say, and they are really good. I had the privilege, मतलब मेरी टीम में कुछ थे who were from Bangalore and Christ Bangalore. My goodness, they are good. I tell my kids, तुम ना जितनी तुम्हें जब तक विद्या माँ की रिस्पेक्ट नहीं करोगे. I think before I switch on my laptop also ना, I remember सरस्वती माँ कि हम नॉलेज की बात करते हैं, विजडम की बात कर रहे हैं, हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है. सो आई टेल देम, 1, you don't value your education, आप अपनी विद्या को रिस्पेक्ट नहीं करते, ठीक है. दूसरा, आपकी ना सामने वाले इंसान के लिए कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, ठीक है. आप डिग्रीज निकालोगे, बट इन लाइफ इफ यू हैव अ लो EQ ना, IQ से हायर तो हो जाओगे, अपनी इंटेलिजेंस से हायर हो जाओगे, बट लाइफ में अगर आप पे इमोशनल क्वेश्चन 0 है ना, या नेगेटिव है, या बिल्कुल ही नहीं है, यू विल नॉट ग्रो इन लाइफ. आई एम अ वेरी पीपल पर्सन बिकॉज आई एम वेरी रीचेबल, है ना. मैं एकदम मतलब हाँ, आई एम हियर, आई कैन हेल्प यू आउट, राइट. सो दैट इज माई EQ. अगर मेरी वो कैपेसिटी भी नहीं होता है, मेक श्योर टू कनेक्ट द पर्सन विद द राइट पर्सन. But 1, we have valued and respected of what we have given to this field, right? So वो हमारे लिए important है. And हम देखते हैं there are kids who are actually struggling financially. There are kids who actually हमें जब हम, and we are the, I don't know with the other institutes, but we are one institute that charges students in installments. हमारा स्लो चलता है साइकिल, है ना. ये हमारा इंस्टॉलमेंट सिस्टम है, हम स्लो फीस आती है, एवरीथिंग कम स्लो. नाउ द टीम सेज मैम मत करा करो, है ना. देयर आर स्टूडेंट्स हु क्विट इन बिटवीन एंड एवरीथिंग, दे आर लाइक हमें क्या, है ना, हम क्या कर लेंगे उनका. बट आई फील इन द लॉन्ग रन, अगर हम आपको कुछ नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है, वैल्यू दे रहे हैं, द इंस्टॉलमेंट इज नॉट फॉर द स्टूडेंट, इट इज़ फॉर द पेन ऑफ योर फैमिली मेम्बर, दैट वी फील कि नहीं, कहीं बार एज फैमिलीज वी हैव स्ट्रगल्ड. आई हैव सीन मेरे अराउंड कि कहीं बार यू नो मंथ में एक रेंट देना भी कहीं फैमिलीज के लिए कितना मुश्किल होता है. And you know your family is investing in your education, the least you can do is जो उनके resources मत waste करो. I do not tell anyone to quit my class. I tell them if you're not going to respect your parents का resources ना, don't sit in my class also. मतलब I feel bad कि मतलब मैं किसी parent का hard earned money waste करवा रही हूँ फिर. So it's very important to understand your own values. आपकी values क्या है. सो आई थिंक अगेन कि हमारे घर वालों ने हमें ऐसे सिखाया कि आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते. टीचर आपके लिए आपका गुरु है, ठीक है, पैर छूते हैं हम, जो मर्जी, मतलब ऑल दीज वैल्यूज ना, वी हैव टेकन इट इनटू आवर वर्क. एंड आई थिंक दैट रियली रिफ्लेक्ट्स अस, रिफ्लेक्ट हु वी आर एज पर्सन, हु वी आर एज एन ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम बच्चे को अगर टीम ने बच्चे के साथ बदतमीजी करी ना, वही टीम इज लाइक आउट, ठीक है. वही अगर बच्चा टीम से बदतमीजी करेंगे, बच्चे को भी कहेंगे सेम. इट इज इक्वल. वी आर क्रिएटिंग अ वर्क कल्चर, वी आर क्रिएटिंग अ कम्युनिटी वेयर एवरीवन इज इक्वल. देयर आर नो हायरार्कीज. आई रिमेंबर आई वाज इन अ वेबिनार, आई वाज क्वाइट यंग देयर, राइट. सो आई वाज क्वाइट यंग एंड दे वर ऑल प्रोफेसर्स इन देयर, ठीक है. सो नॉट अ वर्ड एनीवन स्पोक. आई वाज लाइक हायरार्कीज आ रही हैं, इसलिए नहीं आप बात कर रही हो, इसलिए नॉट आस्किंग मी एनी क्वेश्चन ऑल्सो, राइट. So that is I told them please, मतलब मेरे से ना ऐसे वेबिनार्स में don't make me where you know you feel मतलब वो ज़्यादा ही बड़े हैं आपसे, तो वो don't want to open this. It happens. बहुत कौन हो आप? It has happened to me as well. और बहुत बुरा लगता है यार. कौन हो आप? मतलब अगर आपको इंस्टीट्यूट ने बुलाया, आपकी कैपेबिलिटी पे बुलाया है, उन्होंने हायरार्कीज नहीं देखी ना. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट it's very important for you to understand that those hierarchies are you have to let go. बहुत सारी बातें होगी मैम. Yes. And बहुत कुछ डिस्कस किया. कट कराना. ये कट नहीं होने वाला है. Kids know that you know there's so much to explore and there's so much they have to learn to take stand for themselves. Right. I when we were talking about empowerment na, right. This is empowerment. I take stands for these students so that you know
वी आर क्रिएटिंग दैट अपवर्ड स्पाइरल ना. आज मैं तुम बच्चों तुम्हारे लिए स्टैंड ले रही हूँ अपनी फील्ड में होके, अपनी फील्ड वालों को बोल रही हूँ आप लोग गलत करते हो बच्चों के साथ, ठीक है. इफ आई एम टेकिंग दैट स्टैंड, आई होप यू ऑल्सो लर्न टू टेक अ स्टैंड फॉर योर जूनियर्स. इट इज सो इम्पॉर्टेंट. आपने जो सह लिया, you have set that example for your juniors. I do not want to be that senior for my students that मैम ने ऐसे करो और मैम ने ये सहा तो हम भी इसे सह सकते हैं, नहीं सहना. Right? So if I am being honest, if I am being very transparent and I'm telling you being in this field, I see so much wrong is happening in this field, right? So I do not want to be that person, and I will make sure that my students or the juniors or anyone who's enthusiastic about psychology field does not have to go through what we have been through. So I think it's very with the ending note, ma'am, एक लाइन के लिए आप सारा समराइज करके फ्लूट हुआ. ठीक है. So see, one, if we talk about, मेरा लाइफ का एक ही मंत्र है, ठीक है, which is नियत से ही बरकत है. ठीक है. I live with this motto of my life every morning. Good intention will take you to the right places, will bring you the right people. नियत है तो लाइफ में बरकत ऐसी होगी ना कि कभी रुकेगी नहीं, राइट. सो बच्चों को ये समझना ज़रूरी है कि आप किसी भी फील्ड में जाओ, अच्छी नियत से काम करोगे, आपको रिकग्निशन भी मिलेगी, आपको सही लोग भी पहचानेंगे और आप लाइफ में आगे जाओगे, राइट. सो दैट इज़ वन. दूसरा, एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट माई सेल्फ, बिकॉज मैं भी एक स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे लगता है अगर हमने कुछ चीज़ें सही है ना, आई रियली होप यू गाइज डोंट become that example for the coming generation. Psychology will have a boost. Psychology is already a boosting career. It is becoming. MPs छोड़ के they coming to our It is becoming. So अगर हमें इतने लोग हमारी फील्ड को इतने पैशनेट हैं और जब वो इस फील्ड में आके देखें कि इस फील्ड में क्या चलता है, then it's very heartbreaking. So as a student, I feel, as a student myself, I feel कि अगर आपके साथ गलत सह रहे हो ना, गलत मत सहो. This is how you empower the other students also. Third, if you're a young person and you want to start your entrepreneurship journey, चाहे वो psychology है, चाहे वो आपका art है, anything, begin it. Until you won't take that first step in your life ना, you'll never know if it will work for you or not. कदम लेके ही पता चलता है कि उड़ पाएंगे, गिरेंगे या उड़ेंगे, right? But until you won't take that first step, you'll never understand also if it's important for you, if it's workable for you. So don't be in that mindset. Don't self-reject yourself. As I tell students, self-rejection mat karo, khud ko mat reject karo. And I hope you find your courage to do or be what you want to be. And finally, skills पे focus करो. Your skills are very important because आप human से deal कर रहे हो इस field में. You are not dealing with कि हमें पता है ना H2O मिलाएंगे तो water ही बनेगा. वहाँ कोई दूसरा पॉइंट ही नहीं है. बट आप किसी के दिल दिमाग, समथिंग सो फ्रेजाइल वी आर, एंड हम उन लोगों से डील कर रहे हैं. सो यू हैव टू बी योर एथिकल बेस्ट. मतलब यू कांट प्ले विद अनदर ह्यूमन्स इमोशन और हिज ट्रबल और बैंक अपॉन his insecurities and his struggles. So I think that is one thing I have realized. Wow. A lot to take. And I am grateful because of this platform I'm able to talk, because usually what happens, we stay quiet. We stay quiet because we feel either we are triggering students or we are creating enemies for ourselves in this field. So we prefer to stay quiet. But if you have given me this platform, I would talk about it, right? We are dealing with psychologists, we are dealing with future psychologists. एक इंस्टा बायो पे फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट लिखने से ना वो चीज़ नहीं बदलेगी. खुद बदलना है, खुद को बदलना है. एंड कब कब कौन सी स्किल है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में जाना है और आप क्लिनिकल स्किल सीख रहे हो, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर इन लाइफ. आइडेंटिफाई करो कहाँ जाना है और कौन सी स्किल्स वहाँ के लिए ज़रूरी हैं. दैट इज़ आई थिंक द अदर स्टूडेंट्स आर डूइंग ना. ब्लाइंडली CBT सीखना है, बट आपने कौन से सेटअप में जाना है जहाँ आपका CBT यूज़ हो, इस चीज़ का यूज़ हो. एग्जैक्टली. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक ब्लाइंडली कुछ भी सीख रहे हैं मत सीखो. सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. या. Well, thank you so much, ma'am. Thank you for going on the podcast. Thank you. Your teacher, it's been a pleasure. कि मतलब
वही है कि it's a team effort, but thank you. You called me here and I'm proud of you that you're doing so well in life. So happy, so proud. Thank you so much, ma'am. Well, आज हमने बहुत सारी बातें करी. आज हमने बातें करी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बारे में, साइकोलॉजी किड्स के लिए हमने बहुत सारी बातें करी हैं. बहुत सारा ज्ञान दिया है, और वो ज्ञान जो कि आपको लेना चाहिए, जो आपको समझना चाहिए साइकोलॉजी फील्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए, अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, राइट. मैं आशना मैम को थैंक यू फिर से करूँगा कि उन्होंने टाइम दिया. आई वॉज एक्चुअली परसुइंग हर टू डू दिस पॉडकास्ट. 3-4 months. Please let me be in the right space. Let me just breathe. And I was like, नहीं करना ही है. मतलब I know as it's my duty as a teacher also to give back all the support you have given me and the faith you have shown me when you first entered the classroom. So I think it's very important. Thank you. And I can really say it was helpful. And she runs her own institute that goes by the name Psychopedia. उनकी online presence भी है. If you can go there, check out their page, check out their website. इनका Instagram handle भी check कर सकते हैं by the name of Psychopedia. With this ending note, kindly please like, share and subscribe to the channel. You can also check our website that goes by the name cognify.io. We are trying to help mental health professionals treat their clients in a much more better way. We are trying to help clients और mental health professionals को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं. And आप हमारा Instagram का handle भी check कर सकते हैं. That goes by the name Cognify Health. With this and asking ma'am to come again on the podcast, we are ending this podcast. Thank you. Bye. Thank you.